फ्रेंड, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और नया लेक्चर क्रिएट कर रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ 2026 डेवलपमेंट ऑफ टाइप ऑफ यूजर इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ 2026 डेवलपमेंट ऑफ टाइप ऑफ यूजर इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। दैट मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास 2026 में और इसके प्रकार सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यूजर के लिए किस प्रकार होंगे। वी कैन क्रिएट वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, जस्ट लिसन टू ऑल स्टूडेंट एंड एवरी स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस student, please carefully listen to me what is telling for you every student and what is explained artificial intelligence topic, and listen for carefully and understand easy. Now ago topic and start weekend lecture. Just listen to you and understand for student. We can start. Okay. The topic is artificial intelligence of 2026 development of type of user in software industry. First type multi-agent architecture, second type digital labor workforce, third type physical AI, fourth type social computing, five type variable AI, six type quantum utility, seven type edge per reasoning, eight type enforced hybrid computing. Total define 8 types. तो मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया? मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर, डिजिटल लेबर वर्कफोर्स, फिजिकल एआई, सोशल कंप्यूटिंग, वेरिएबल एआई, क्वांटम यूटिलिटी, एज फॉर रीजनिंग, एम्फोसिस हाइब्रिड कंप्यूटिंग. जस्ट नाउ #AI trend 2026 quantum agentic AI and smarter automation flowchart TD. AI trend in 2026 Arrow B agentic AI and digital labor. Arrow C physical and social AI. AD Arrow D variable AI and quantum computing. Arrow E edge reasoning and amorphous hybrid computing. B1 multi-agent orchestration. B2 digital labor workforce. C1 physical AI. C2 social computing. D1 variable AI. D2 quantum utility everywhere. E1 reasoning at edge. E2 enforces hybrid computing. मतलब ये बोल रहा है इसकी फ्लो चार्ट डिफाइन की गई है, इसकी टीडी में फ्लो चार्ट जो एआई की ट्रेंड 2026 में है, एजेंटिक एआई के रूप में और डिजिटल लेबर के रूप में. इसको क्वांटम कंप्यूटिंग और सोशल एआई और फिजिकल सोशल एआई के रूप में डिफाइन किया गया है, डिजिटल लेबर के रूप में भी डिफाइन किया गया है, इसके वर्क स्पेस को भी डिफाइन किया गया है और सोशल कंप्यूटिंग को भी डिफाइन किया गया है, क्वांटम यूटिलिटी को भी डिफाइन किया गया है, रीजनिंग द एज को डिफाइन किया गया है और एम्फोसिस हाइब्रिड कंप्यूटिंग को भी डिफाइन किया है. मतलब ये ए जो है यहाँ पे ए जो है एआई जो डिफाइन कर रहा है, एआई ट्रेंड 2026 डिफाइन कर रहा है, और बी जो डिफाइन कर रहा है एजेंटिक एआई एंड डिजिटल लेबर को डिफाइन कर रहा है. यहाँ पे ए जो है सी के ए जो एरो को पॉइंट कर रहा है सी को फिजिकल एंड सोशल एआई, और ए जो है एरो को पॉइंट कर रहा है डी को
वेरिएबल एआई एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। ए जो है ई को एरे को जरा पॉइंट कर रहा है, एच रीजनिंग एंड एम फोर्सेस हाइब्रिड कंप्यूटिंग, और बी जो है B1 को पॉइंट कर रहा है मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन, और बी जो है B2 को पॉइंट कर रहा है डिजिटल लेबर वर्कफोर्स, और सी जो है C1 को पॉइंट कर रहा है फिजिकल एआई, और सी जो है C2 को पॉइंट कर रहा है सोशल कंप्यूटिंग, और डी जो है D1 को पॉइंट कर रहा है वेरिएबल एआई, और डी जो है D2 को पॉइंट कर रहा है क्वांटम यूटिलिटी एवरीवेयर, और ई जो है E1 को पॉइंट कर रहा है रीजनिंग एट द एज, और ई जो है E2 को पॉइंट कर रहा है एम्फोसिस हाइब्रिड कंप्यूटिंग। ठीक है, आई होप आप लोग समझ आया होगा। मैं दोनों लैंग्वेज समझा रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी में, तो आप लोग जिस पर कंफर्टेबल है समझिए और सीखने की कोशिश करिए। देन इसके बाद हम आते हैं फर्स्ट जो हमारा है एजेंटिक एआई एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क। फर्स्ट पॉइंट जो बोल रहा है मल्टी एजेंटिक ऑर्केस्ट्रेशन, इसमें बोल रहा है एआई सिस्टम विल यूज टीम ऑफ स्पेशलाइजेशन एजेंट working together to solve complex problem more efficiently. First, the rise of AI agent. First, in 2025, AI agent emerged as a key trend, demonstrating the ability to reason of plan, and take action at task time. Thus, agents have delivered of the promise with many platforms now available for tasks like coding and basic computer use 11. And however, no single agent perfect at everything, which lead to the idea of multiple agent collaborating. ठीक है, मतलब ये बोल रहा है 2025 में एआई एजेंट का जो होगा उसकी की ट्रेंड होगी, और उसकी एबिलिटी के अनुसार रीजन के अनुसार प्लान और टेक एक्शन टास्क को परफॉर्म कराएंगे। सेकंड बोल रहा है द एजेंट डिलीवर करेगा उसको अपने प्रॉमिस के अनुसार मेनी प्लेटफॉर्म को, बहुत सारे प्लेटफॉर्म को अवेलेबल कराएगा, टास्क को, कोडिंग को और बेसिक कंप्यूटर को यूज करने की परमिशन देगा। थर्ड जो बोल रहा है हाउएवर नो सिंगल एजेंट, मतलब कोई भी सिंगल एजेंट नहीं परफेक्ट नहीं होगा, एवरीथिंग किसी प्रकार से विच लीड द आइडिया ऑफ मल्टीपल एजेंट कोलैबोरेटिंग, मतलब कोलैबोरेशन करेगा, बहुत सारे एजेंट मिलके, कोई सिंगल एजेंट वर्क नहीं करेगा, सारे मल्टीपल एजेंट मिलके वर्क करेंगे, बहुत सारे एजेंट मिलके वर्क करेंगे, तब जाके अपना टास्क परफॉर्म होगा और वर्क आगे बढ़ेगा। ओके, हाउ मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन वर्क। First, a planner agent break down big goal into. First जो बोल रहा है a planner agent break down big goal into smaller steps. Second, worker agent then handle specific step like writing code or calling API. Third, a critic agent check the work of other agent, flagging any issue. Fourth, all those agents work together under coordinating layer called the orchestra. Fifth, the setup allow for cross-checking and break down problem into the smaller areas to verify step. Then now, digital labor workforce. Autonomous digital worker will enhance human capability by interpreting complex input, executing workflow and integrating with exist system, all with human oversight. First, define digital worker. First, the digital labor workforce consists of the autonomous agent that can perform various tasks. Second, capability of digital worker. First, they can pass tasks by understanding different types of input like text, image, or audio multimodal input. Second, after understanding the task, they execute a workflow which is a sequence of state of complete and action plan. Third, thus workflow are then integrated into exist system to take further action potentially involving other components.
Third, human into the loop. First, thus digital worker system are improved by human in the loop AI where human provide essential guidance. Second, human offer oversight ensure tasks are done correctly. Third, they provide correction when error occur. Fourth, they given static guidance or rail keep agent on track that ensure they perform intended. Fourth, impact on human capability. First, this trend will be create force multiplying effect significant extending what human can achieve. And second, AI interacting with the real world and each other. 2.1 fast physical AI. Physical AI will enable model to understand the interact with the real 3D world, moving robotics from explicit programmer to learn through simulation and world foundation model from digital to physical interaction. First, traditional large language model generating text and diffusion image model generating pixel or image all operation in a digital space. Second, physical AI focus on modules that can understand and interacting with the real three-dimensional world life. Third, this evolved models that can be perceive their environment, understand physical and take physical action such as thus performed by robotic. Second, evolution of robotic program. The first previous making a robotic perform user task required for program an explicit rule like if you see obstacle turn left. Second, this rule based program was entirely done by the human. Third, training physical AI module. The first physical AI changes by training model in the simulation that mimic the real world. Thus, the thus model learn how object behave physically, how gravity work, and how to interact with the object. Third, there are the sometimes called work foundation model, with the generative model that can create and understand 3D environment. They can also predict where it will be happen next in a physical sense. Fourth and five. By 2026, thus world module expected to human robotics from the research as a commercial product, indirecting that physical AI scaling of 46. Social computing. Social computing will create a shared AI environment where agent and human seamlessly collaborate, exchange context, and understand each other. Intention leading and collecting intelligent. First concept of social computing. First compute social computing describe world where many AI agent and human operating with the shared AI environment fabric. This means agent and human are connecting the through this fabric. Second, seamless interaction and understand fast information flow freely between agent and human allow them to understand each other and grasp intention. Second, once intent and they inform and clear, they can take action, they affect each other or their shared environment. Third, this entire process happens seamlessly across the system. Third, benefit of the shared space. First, this shared space enables better collaboration. First, facility context exchange the meaning of the environment, understand the situation. Third, it lead the effective understand between participating 55 outcome. Fourth outcome, collect the intelligence. The first result is the empathic, empathetic network of interaction. Second, this is a referred to the collective intelligence, the real world surround computing where many entire work together intelligent. Now third topic, governance, quantum and distribute variable AI. The EU AI Act will makes AI system especially high risk ones auditable, traceable by requirement detail, document and transparency and data linearity setting global stand for AI governments. First, the
EU AI Act impacts C. The EU AI Act set up becomes fully applicable in 2006. Second, it is the compare to GDPR, but especially for artificial intelligence. Second, core requirement auditable and traceable AI. First main idea is that AI system, particularly thus consider high risk, must be auditable and traceable. Third key aspect of compliance. First, documentation builder of high risk of the need to provide technical document showing complement include how model were tested risk identified. Transparency user must be used aware they interacting with AI. For example, synthetic text generated by AI need to be clearly labeled 69. Third, data lineage is much possible to summarize where training data come from the and prove that copyright out where respected. Fourth, global influence. Thus, GDPR influence global privacy standard. The EU AI and expected to the become template for AI government worldwide 71. And next topic, quantum utility everywhere. By 2026, quantum computing will begin reliable, solving real-world problem more efficiently than classical method, integrating with existing infrastructure, deliver particle value in optimization, simulation, and desire making. Quantum computing emergency. In first 2026, quantum utility become widespread, meaning quantum computing will reliable solve real world problems. Second, the solution will be better, faster, or more efficient than the achieved with the classical computing method. Second, hybrid quantum classical system at first. At this stage, quantum utility scale system will work along and integrated with classical computing infrastructure. Second, this collaboration will deliver particular value in the everyday workflow. Third, application of quantum utility. First, quantum computing will be significant help with the optimization task. Second, it will also advance simulation capability. Third, it will improve decision making process. Fourth, the three type of tasks will be previously beyond the reach of the classical computing. Fifth, this hybrid quantum classical era will be transformed quantum computing into the mainstream technology into delay business operation. Reasoning at the edge. Smaller AI model will gain advanced reasoning capability by knowledge from larger model, real-time problem solving directly on the device without the needing data center. First, evaluation of small model. First, last year the focus on the very small model. Second, 2006 small model will be gain ability think reasoning. Second, inference time computing frontier model. Today, most important AI model, frontier model, and this means extra time thinking, providing answer, drawback, and the required computing power. Third, this distilling reasoning into the smaller model. Research has defined with the distilling the reasoning information smaller model. Second is allows smaller model to perform complex thinking process, messy reasoning model that generating many state to state solution use, problem to solution use. Fourth, enforce hybrid computing. Bleeding AI model cloud infrastructure enforces hybrid computing will create a flat computing background where diverse AI model architecture, various cloud hardware, CPU, GPU, QPU, flat computing backbone enforces hybrid computing, evaluate AI model topology. ठीक है different cloud computing, many different type of chips. Then future possibility, potential DNA computing
although likely behind the DNA computing could eventually become part of this hybrid computing mix. तो ये था हमारा टॉपिक, ये था हमारा सेशन और ये था हमारा लेक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2006 डेवलपमेंट एंड व्हाट स्टाइल। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। लेक्चर लास्ट तक समझिए और लास्ट तक सीखने की कोशिश करिए, तो आप लोग समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक कीप वॉचिंग, थैंक यू, और नाइट जस्ट सब्सक्राइब, फॉलो एंड लाइक, थैंक यू, कीप द वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।